Hello, Assalamu alaikum students. Today I'll be discussing one of the lessons from class 8th, and it is a short story titled as Rustum and Sohrab. Before I go to the story, let me first of all tell you what is a story and what is a short story here. You know, in your English book you find different lessons. There are dramas, sometimes plays, we read novels, we read short stories, जिसे उर्दू में आप अफसाना भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, ये जो स्टोरी होती है, इट इज अ वर्क ऑफ अ प्रोज फिक्शन. जनरली फिक्शन होता है, because there are the genres that we use, prose or poetry, in which we find fiction and non-fiction, nothing to do with that. लेकिन ये स्टोरी जो है ये शॉर्ट लेंथ की होती है. दिस इज वेरी शॉर्ट इन लेंथ, इंक्लूडिंग अ फ्यू कैरेक्टर्स. इसमें कैरेक्टर होते हैं, यानी किरदार होते हैं, काम करने वाले होते हैं, कुछ होते हैं, फ्यू होते हैं, 1 से 6 तक, ये डिपेंड करता है. और ये एक सिंगल सेटिंग में बैठ के इसको किया जाता है. ड्रामा की तरह या प्ले की तरह इसको डिफरेंट सीन्स नहीं होते हैं, बल्कि एक ही सेटिंग में इसको एक ही सिटिंग में किया जाता है. इसका जो वर्ड लिमिट होता है वो बिल्कुल लिमिटेड है, एंड इसका एक प्लॉट होता है, प्लॉट स्ट्रक्चर, जिसमें चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं, ओपनिंग, मिडल, क्लोजिंग एटसेट्रा, इन ऑर्डर टू डेवलप द स्टोरी. और कैरेक्टर्स मैंने बता दिया 1 से 6 तक होते हैं. डिफरेंट ये फिर डिपेंड करता है कि कैसी स्टोरी हो. कैरेक्टर्स तो बहुत किस्म के हैं, नहीं यहाँ पर मैं वो बयान नहीं करूँगा. इसमें जनरली डायलॉग्स लिखे जाते हैं, डायलॉग होते हैं कैरेक्टर्स के बीच. और सेटिंग और एटमॉस्फेयर जो है, ये इसका एक अहम जुज़ है जहाँ पर इसको पेश किया जाता है. और इसमें जो टेक्निक्स हैं, नैरेटिव टेक्निक्स, सिर्फ कुछ राइटर जो हैं इसको फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, या उसके अलावा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये डिफरेंट होता है फ्रॉम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. देन स्टोरी में एक थीम होता है, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी होती है. क्यों हम स्टोरी पढ़ते हैं, क्यों हम ये लेसन्स पढ़ते हैं, प्रोज क्यों पढ़ते हैं, इसका एक हमें जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि हम उसमें कुछ सीखें. बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज जो हैं, LSRW, लिसनिंग, यानी टीचर मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे. लिसन, प्रॉपर लिसनिंग आपकी होनी चाहिए. व्हाट डज लिसनिंग मीन? लिसनिंग मीन व्हेन a teacher, when I read the story, you must understand what I say. That is listening. Then there is speaking. Some exercises are there which a teacher will do at the end of the story, so that students can able to speak even things for speaking purpose. Then there is reading and writing. Now, how you can be able to read your English and how you can be able to write. These are the general objectives. Then every genre has this kind of objective in mind. But while we read a story, why do we read a story? Because we learn some moral from the story. And have you heard, do you listen some stories? Yes, you listen. And today I'll directly come to the topic and I will tell you a story, because students like to listen the stories, especially children after 10th class, after 12th class, they like stories, different kinds of stories. And I think present day these students generally they like even horror, these short films or these stories, what I have observed. And I hope that you will
inshallah like this story and open your books. This is a story in your book, page number 100, and the story is Rustum and Sohrab. Rustum and Sohrab. This is a story about a father and son, his son. Rustum is father and Sohrab is his son. Now, I have just summarized the story. I will tell you the whole story. You will listen me carefully, because I will tell you the meaning side by side. Then you will open the books and read it elaborately, whatever is there. But see, I'll read it, and this is also written there. If you look towards your books, you can, but please listen to me carefully. But let me first of all give you the introduction about this story. Rustum and Sohrab is an interesting story from Persia, present day Iran. The story is about the great warrior called Rustum, who was called the shield of Persia, because he saved Persia many times from the invasions from those invaders. That's why he was a soldier, brave soldier. He had a son named Sohrab. उसका एक बेटा भी था, Sohrab उसका नाम था. But the situation was such that Rustum did not know that he had a son, because we will learn in the story what happened. वो अपने बेटे के बारे में जानता ही नहीं था कि उसका बेटा है, और किस तरह से वो जान गया वही देखना है, because this is a tragedy. Sometimes you find about dramas are written in some are tragic, some are comedies, some are tragic comedies. किसी में खुशी होती है बाद में, किसी में at the end we feel sad, and this is a story where we feel sad because a father kills his own son unknowingly. How Rustum kills his own son without knowing what happened. And that's why it so happened that in one of the fights between Rustum and Sohrab, Sohrab gets killed by his own father. So what happens? Let us read. Let you see the books and let you enjoy the story first. Long ago in Persia, it is about a country now called Iran, there lived a great soldier called Rustum. So Rustum was a soldier. वो सिपाही था, एक गवर्नमेंट में काम करता था, as a warrior, as a brave soldier. He was so brave that he was called the shield of Persia. Shield, because I'll tell you the meaning of those words. Those you find difficult. उर्दू में इसको सिपर कहते हैं, यानी something when we want to save ourselves. If a person having sword from the one hand, and here we use that kind of thing that we save ourselves from that. That's called a shield in English. The king Kaikous was so proud of him that he used to say that he had nothing to fear till Rustum was with him. So he was leading a party, that means soldiers. He was a leader soldier. So the king was happy. He hadn't any, उसका कोई भी ये खौफ नहीं था किसी भी हमले के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि वो जानता था कि मेरे मुल्क में रुस्तुम जैसे सोल्जर्स हैं, तो मुझे क्या डर है अपने आप को या अपने सल्तनत को, अपने इस हुकूमत को बचाने का, क्योंकि उसका कोई डर ही नहीं था. रुस्तुम जैसा वहाँ पे सोल्जर्स थे. तो क्या हुआ? On the other hand, their enemies used to say that they could never dream to attack Persia till Rustum was there. See, Rustum had a great name because even the enemies means दुश्मन जो भी थे, जो उस मुल्क पर हमला करना चाहते थे, वो भी जानते थे कि अगर हमने इस मुल्क पर हमला करने की कोशिश की, इस बादशाह पर हमला करने की कोशिश की, तो वो नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर रुस्तुम जैसे बहादुर सोल्जर्स थे. तो क्या हुआ? One day Rustum met a Tatar princess, Tanima.
and wished to marry her. They both lived liked each other, and Rustum married her. So Rustum married a girl namely Tanima. You must remember these names. But he had to leave her soon because the king called him back. He was outside the country and he married a girl. Then only after few days, कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ कि उसके मुल्क के अपने बादशाह ने उसको वापस बुलाया. क्यों बुलाया वापस? पहले ये देखो क्या हुआ कि शादी जब हो गई, the princess had to bid him goodbye with sadness. ये शहजादी नहीं चाहती थी कि वो, यानी तानिमा वो नहीं चाहती थी कि वो उसको छोड़े, वो उसको अलो करे कि जाए, लेकिन वो भी मजबूर थी क्योंकि बादशाह ने उसको बुलाया वापस. She was expecting a baby at that time. Rustum gave her a diamond and said that if a girl was born to her, she should marry her off, and if a son was born to her, she should tie that diamond on his arm and keep their marriage sacred. रुस्तुम ने इस अपनी बीवी को, जिसके साथ उसने शादी की थी, अब उसका एक बच्चा होने वाला था. तो क्या हुआ कि रुस्तुम ने उसको कहा कि अगर सबसे पहले आप इस शादी को सेक्रेट रखिए, किसी को मत बताइए. अगर आपको लड़की हमारी पैदा हो गई तो आप इस डायमंड को बेचिएगा और लड़की की शादी वगैरह कीजिए, मुझे मत बताइए. या अगर आपका लड़का हो गया तो क्या करना है आपको उसके इस ये डायमंड जो है ये उसके आर्म इस बाजू में आप इसको बांधिएगा और फिर उसको मेरे पास भेजिएगा, या क्या करना है, लेकिन ये डायमंड उसी के पास रखना है. लेकिन ये मैरिज एज ए सेक्रेट आपको रखना है. So what happens? After some time a son was born to तानिमा. तो खुदा का करना था, उनको बेटा पैदा हो गया. But she sent word to Rustum that a daughter was born to him, thinking that he would take her son away and make him a soldier. See what happens, what is the actually moral and what is the theme of the story, and what happens when we do something wrong in our life. तो इसकी बीवी ने ये सोचा कि अगर मैं उसे ये बताऊं कि आपको बेटा हो गया है, यानी मैंने बेटे को जन्म दे दिया है, तो वो आ जाएगा और उसको ले जाएगा, उसको वो सोल्जर बनाएगा. तो उसने झूठ बोला उससे. She told a lie and told him, उसने उसको ये बुलावा भेजा कि उसके यहाँ बेटी पैदा हो गई. वो देखो कि यहीं पर प्लॉट का जो है ना, ये ड्रामा, ये जो ये स्टोरी जो है किस तरह जब खात्मा होता है इसका, तो किस तरह ये लाई, जब हम कभी झूठ बोलते हैं तो इसका असर हमारी जिंदगी में कितना होता है. तो उसने क्या झूठ बोला? हाँ, उसने बोला कि ये हमारे यहाँ बेटी पैदा हो गई, बेटा नहीं. तो क्या हुआ? She named the child सोहराब. अब ये जो बेटा पैदा हो गया है उसने उसका नाम सोहराब रख दिया है. Sohrab grew up into a brave and handsome boy, and you know that he was the son of a brave warrior, brave soldier, Rustum, and that's why he also became brave. Tanima gave him such a kind of knowledge and such a kind of these tactics, he became as brave as his own father. He learned to use the sword and shield and became skilled in the arts of war. तो उसने महारत हासिल की है जंग में, लड़ने में, और वो एक बहुत ही अपने बाप की तरह बहुत ही जरूरतमंदाना और बहुत ही बहादुर सिपाही बन गया. कौन? सोहराब. जिस तरह एक सिपाही बनता है उसी तरह वो भी बन गया, जिस तरह रुस्तुम था. One day a warrior came to Sohrab's village and challenged people for a combat. उन दिनों क्या किया करते थे, एक दिन रुस्तुम, ये सोहराब अपने गांव में था, तो कोई दूसरा किसी जगह से आया तो उसने वहां पे ऐलान कर दिया कि आइए, है कोई यहाँ पर जो मुझसे कुश्ती करे, जो मुझसे कुश्ती करे या मुझसे लड़े. तो क्या हुआ? तो ऐलान हो गया ये जंग का. तो फिर क्या हुआ?
Sohrab got ready to fight him. तो सहराब आया सामने, उसने कहा मैं उससे लड़ूंगा, मुझे वो आई एम सिकल लाइक माई, लेकिन वो नहीं जानता था उसका फादर कौन था. उसकी माँ ने उसको सिखाया था अच्छी तरह से आर्ट ऑफ वॉर, यानी हाउ टू फाइट विद अदर्स. बट द वॉरियर आस्क्ड हिम हिज फादर्स नेम विच ही डिड नॉट नो. इस वॉरियर ने जो उसके साथ लड़ना चाहता था, क्योंकि ये बनता था ज़रूरी, वो एक दूसरे से इंट्रोडक्शन देते थे कि आपके बाप का क्या नाम है, यानी आपका बाप कौन है. तो अब उसकी माँ ने छुपाया था उससे कि मेरा बाप कौन है, यानी आपका बाप कौन है, उसका नाम क्या है. तो यही हुआ कि उसने उसे कहा कि ठीक है, मैं पहले अपने माँ से बोलूं कि मेरे बाप का नाम क्या है. तो वो उसकी माँ ने छुपाया था आज तक, लेकिन इस सोहराब ने उसको मजबूर कर दिया है कि नाम कहने पे. तो इसलिए उसकी माँ ने उसको उसके बाप का नाम बता दिया. The warrior told Sohrab that he could not fight with people of inferior race. क्योंकि वो जो लड़ने वाला था, जंग करने वाला जो था, कुश्ती करने वाला था, उसने कहा कि मैं आम आदमियों से लड़ता नहीं. अगर कोई मुझसे लड़े तो वो भी किसी ग्रेट, उसका फादर भी कम से कम वॉरियर होना चाहिए, और जंग के जो यानी उसके साथ वो फाइट करे, वो इन्फीरियर के साथ किसी के साथ फाइट नहीं करेगा, बल्कि उनका जो ये फैमिली बैकग्राउंड होता है वो वॉरियर होना चाहिए. तो इसीलिए ये चला गया और अपने माँ से ये बताने के लिए कि मेरे बाप का क्या नाम है, वो कौन. He came back home and asked his mother who his father was. तो उसने वो वापस आया और अपनी माँ को बता दिया कि बोलो मेरे बाप का क्या नाम है, मेरा बाप कौन है. At first she did not tell, but Sohrab insisted her. She told him that Rustum was his father. पहले तो उसकी माँ ने छुपाया था, लेकिन आखिरकार बेटे ने उसको मजबूर कर दिया और आखिरकार उसने उसके बाप का नाम बता ही दे दिया. Sohrab was happy and went straight to the warrior. अब सोहराब भी ज़बरदस्त खुश हुआ. उसने सोचा, उसने ये जाना कि मेरा बाप एक बहुत बड़ा वॉरियर था, वॉरियर है क्योंकि वो दूसरे कंट्री में रहता था. तो अब क्या है, तो अब ये लड़ने के लिए गया. लेकिन क्या हुआ, when he disclosed to him who his father was, the warrior ran away without fighting. वो रुस्तुम का इतना दबदबा था उस इन इलाकों में या इन कंट्रीज में कि जो ही इस वॉरियर ने रुस्तुम का नाम सुना तो क्या हुआ, वो दुम दबा के भाग गया. उसने कहा कि नहीं यार, मुझे आपसे लड़ना नहीं है, क्योंकि आपके बाप का बहुत नाम सुना है, इसलिए लड़ने के बगैर चला गया. यानी सोहराब ये जानकर खुश हुआ कि देखो इतना नाम उसके बाप ने कमाया, तो कम से कम मैं देखूं कि मेरा बाप कौन है. इतना नाम उसने इस वॉरियर में किया है, तो मैं जानना चाहता हूं. सोहराब नाउ वांटेड टू गो इन सर्च ऑफ हिज फादर. तो ऑटोमेटिकली उसने चाहा कि नहीं, मैं अपने बाप को ढूंढूं. His mother told him how he could recognize each other since they had never met. माँ ने उसे बता दिया कि देखो आप तो कभी मिले नहीं, आप किस तरह अपने बाप को पहचानोगे. लेकिन उसके बाप ने उसे कहा था कि सोहराब के बाप ने, रुस्तुम ने अपने बीवी से कह दिया था, अगर लड़की पैदा होगी तो उसे शादी करना, मुझे नहीं बताना. अगर लड़का पैदा हो गया तो उसके इस बाजू में आप बाजू पे ये डायमंड बांध देना. तो ऐसा ही हुआ. तानी माँ ने उसको ये डायमंड बांध दिया और ये चला गया अपने बाप को ढूंढने के लिए. She tied the diamond on his arm and let him go. Meanwhile, Rustum had to go to his village to see his ailing father. Meanwhile, Rustum had to go to his village to see his ailing father. Sohrab went on fighting enemies on his way. क्योंकि अब सोहराब को जाना था रुस्तुम को देखने के लिए, लेकिन रुस्तुम वहाँ पे नहीं था. वो अपने एलिंग फादर को कहीं देखने के लिए गया था. उसने अपने इस इलाके को छोड़ दिया था और वो वहीं गया. यहाँ पे जब सोहराब को बीच में रुकाया गया था, लेकिन उसने नहीं माना. उसने एनिमीज के साथ ये अपना जो सिकल था इस्तेमाल करके वो वहां पहुंच गया. He reached the border
and started fighting with Persian army because they did not allow him to move ahead. Persian چونکہ ان پہ بارڈر پہ اپنا فوج ہوتا ہے تو انہوں نے اس کو رکانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں رکا, وہ نہیں مانا. اس نے زبردست لڑائی کر کے زبردست ان کے ساتھ فائٹ کر کے وہ کامیاب ہوا بھاگنے میں اور اندر آنے میں. Sohrab fought so bravely that the soldiers had to send word to Kaikous that it was difficult to stop him and only Rustum could stop him. تو کیا ہوا, اس آرمی جو تھی وہاں پہ سولجرز باقی جو تھے, چونکہ ان دنوں کیا کس طرح فائٹ کیا جاتا تھا, سرڈ سے اور شیلڈ سے, لیکن وہ تلوار چلانے میں ماہر تھا تو اس نے کیا کیا, اس نے سبوں کو ہرا دیا. تو اس لیے وہاں پہ جو وہ آرمی بیٹھی تھی اس نے اس بادشاہ کو, انہوں نے بادشاہ کو یہ بلاوا بھیجا اور یہ کہہ دیا کہ دیکھو یہاں پر ایک آدمی ہے, وہ رکنے والا نہیں ہے اور وہ آنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ, ہم اس کو نہیں رکا سکتے. ایک ہی آدمی ہے ہمارے فوج میں, وہ ہے رستم, جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو رستم کون تھا, وہ تو اس کا باپ تھا, لیکن یہ سہراب نہیں جانتا تھا کہ میرا باپ ایسا ہے یا ویسا ہے. وہ اس نے سنا تھا لیکن وہ اس کو جانتا نہیں تھا. اس لیے انہوں نے رستم کو بلاوا بھیجا کہ آپ آؤ, کہ کوئی آدمی ہے یہاں پہ جو حملہ کرتا ہے, جو ہمارے کنٹری میں گھس آیا ہے, ہمارے علاقے میں گھس آیا ہے. تو کیا ہوا, he sent for Rustum who came immediately leaving his ailing father in the village. اس نے اپنے ailing father کو وہیں چھوڑ دیا, بیمار باپ کو, اور وہ واپس آیا اپنے گاؤں میں. When Rustum came, he told the king if it was necessary to call him back and if there was nobody who could fight that young man. تو وہ واپس آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ کیا یہاں پر کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے, کیا صرف میں ہی رستم ہوں ایک آدمی جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو اس نے اسے کہا کہ نہیں, آپ کا آنا ضروری ہے, you have to come because he was fighting like a lion. وہ ایک شیر کی طرح فائٹ کرتا تھا. تو اس لیے کیا ہوا, Rustum was told that he was very brave like him and only he could stop him. Besides, the young man had asked them that he wanted to fight with Rustum. اور اس نے اس کو یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اس نے سبوں کو ہرا دیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رستم سے ملنا چاہتا ہے اور رستم سے ہی فائٹ کرنا چاہتا ہے. Rustum got ready to fight Sohrab. رستم سہراب کے ساتھ, کیونکہ رستم نہیں جانتا تھا سہراب اس کا بیٹا ہے, جبکہ سہراب جانتا تھا کہ جس آدمی کے ساتھ اس کو فائٹ کرنی ہے وہ اس کا باپ ہے. But he went there in his own dress and he did not wear the soldier's dress. لیکن کیا ہوا, بدقسمتی سے یہ ہے کہ جب رستم اس کے ساتھ لڑنے گیا اس نے وہ وارrior ڈریس نہیں پہنا, اس لیے سہراب بھی نہیں جان پایا کہ یہ رستم سے لڑتا ہے. تو لڑائی ہو گئی. On his way he met a soldier who told him about the qualities of Sohrab. تو راستے میں پہلے چلتے چلتے انہوں نے ایک آدمی ملا رستم کو, اس نے سہراب کی کوالٹیز کہہ دی اور اس کو کہہ دے کہ وہ بالکل آپ کی طرح بہادر ہے, آپ کی طرح لڑتا ہے. رستم in his heart of hearts wished that Sohrab had been his own son. رستم اپنے آپ دل میں ہی سوچتا ہے کہ یہ شاید یہ میرا ہی بیٹا ہونا چاہیے ایسا, لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, کیونکہ اس کی بیوی نے اس کو ڈاک میں رکھا تھا کہ ان کی بیٹی پیدا ہو گئی ہے. When Sohrab heard the mighty voice of Rustum, he thought that it was perhaps his father's. He approached Rustum and asked eagerly if he was Rustum. Rustum thought he was trying to be clever. He asked him if he was going to fight Rustum, only thinking that he was ready for peace. He told him that he did not know who he was, but Sohrab was not frightened. چونکہ رستم نہیں جانتا تھا یہ کون ہے, آپس میں انہوں نے ڈائلاگ گفتگو کی, لیکن گفتگو اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہوں نے فائٹنگ شروع کر دی. He drew his sword. اس نے اپنی تلوار نکالی. And the fight began. اور لڑائی چلتی گئی. The fight continued for 3 days. 3 دن تک یہ باپ بیٹے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے گئے. Then Rustum thought that it be a disgrace if a young man defeated him. رستم نے یہ سوچا کہ اگر میں ایک جوان کے ہاتھوں مارا گیا تو میرے لیے یہ بے عزتی کا مسئلہ ہے. تو اس نے کیا کیا, he took his sword and uttered his war cry.
رستم اینڈ اٹیکڈ سہراب, کیونکہ وہ جب لڑائی پہ آتا تھا تو وہ ایک آواز دیتا تھا, اور اس نے وہ آواز دی, وار کرائے دی, رستم وہ زور سے پکارتا تھا. When Sahrab heard this name, he was unnerved and he lowered his shield. جب سہراب نے نام دیا, اس نے رستم کا نام سنا تھا, وہ اس کا باپ تھا, تو جو ہی اس نے نام سنا تو اس نے اپنا شیلڈ نیچے گرا دیا, یعنی جس سے وہ اپنے آپ کو بچاتا تھا تلوار کی وار سے, تلوار کے اس سکل سے, تو اس نے لور کیا. نتیجہ کیا ہوا, یعنی اس نے ایک طرف کیا اور رستم کی تلوار اس کے سینے میں چلی گئی. تو کیا ہوا, when Sahrab heard this name, he was unnerved and he lowered his shield. In the meantime, Rustam's sword pierced his chest and he fell down. Rustam told him that he was killed by an unknown man, but Sahrab replied that it was not he who had killed him, but his war cry. تو رستم نے اسے کہا کہ آپ کیا مجھے, سہراب نے اسے کہتا کہ آپ مجھے کیا مار سکتے تھے, میں اس سے نہیں مرا, لیکن جو آپ نے کرائی دی اس میں سے میرا جو نام آیا وہ میرے باپ کا ہے. اور اینڈ رستم واز stunned. He told Sahrab that Rustum never had a son, but when Sahrab showed him the diamond on his arm, Rustum was dumbfounded and repented a lot. Sahrab told his father, Rustum, not weep and feel sorry. He made a last wish to his father. He told him that he should take his dead body to his village and bury him there, so that people who pass by will say, Sahrab, the mighty Rustam's son, lies here, whom his great father did in ignorance kill. So he killed him in ignorance. So what is the theme? The theme of the story is that there will be a great problem if there is misunderstanding. Sahrab tries his best to tell Rustam to disclose his identity, but he does not get ready. Ultimately he kills his own son and repents a lot. Then we must not tell a lie. There are many exercises that we can do at the end of the lesson, and mostly I wish you write the first paragraph, and in the first paragraph you will do this kind of activity, different parts of speech. In one this portion you can write articles, then conjunctions, noun, pronoun, verb, adjective and prepositions. And there are other exercises, inshallah. You will just open your books and there you will find different exercises. Just try it in your own home. Be blessed and thank you very much.